Yes, my dear friends, how are you all? I'm coming up with one of the most important subject, and that is chemistry. It's a life of science. Okay, chemistry is something which is the most integral part of the entire science part. I would like to say that the science cannot exist without chemistry. There are various topics which are being concerned with respect to chemistry, which you can idealize yourself with day-to-day life. Okay, so that's why I say that chemistry is something which is different. And because it is different, because it's a part of life, so don't you think, my dear friends, we need to understand that? Yes, we have to understand chemistry, understand life. Next, as I said, there are various chapters which are being incorporated into this particular syllabus of yours of chemistry. Various topics which are there, which you need to absorb it, okay, so that you get the best out of it. Now, I'm going to give you a guesswork now, and that is, start guessing up which is going to be that chapter, which is going to be the most important part of your life, and which is a part of chemistry. Start guessing up, and you'll get the answer very shortly, my dear friends. Hello everyone, my dear friends. Now we are going to start with one of the most important chapter. It's a chapter which goes inside the periodic table. Now what does it mean? Inside the periodic table. My dear friends, when I talk about what type of elements are present in the periodic table, and the answer comes out as what? Yes, the answers are metals and non-metals. And this is the name of the chapter that we are going to start off with. Okay, and that is metals and non-metals. Majority of the elements are metals. Few of them are non-metals. Alright? And in this particular chapter, first of all, what I'll do is, I'll explain you all the theories related to these metals and non-metals. The properties, physical, chemical, and so on. And whatever activities which are there associated with this particular concept, that I'll discuss with you all at the end of the chapter. That means after explaining the entire theory of this particular chapter. Is that clear, my dear friends? Yes. So yes, as I said, the first point we start off with this particular chapter, and that is physical properties of come on, metals. So वहां से शुरू करते हैं अभी हम लोग. जब हम बात करेंगे about physical properties, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाहर के तौर पर मेटल क्या रूप धारण करता है, किस रूप में है वो. Okay, that is what is physical properties is. So to begin with, the first point when we talk about physical properties of metal is they are solids. Okay, what are they? They are solids. Majority of them are solids. Of course, there are exceptional cases also. And the exceptional cases is mercury. To a certain extent, there is one more, and that is gallium. They are going to be in the form of liquid state. Okay, this is liquid. थोड़ा उसे बहने की आदत है. अब जानते हो ना, बहना मतलब क्या होता है? हाँ, लिक्विड है ये, तो थोड़ा वो बहक जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम उसको. ओके, मर्क्यूरी और गैलियम के बारे में. वरना majority of the metals are going to exist in the form of solids. Okay? Next thing is, when you talk about metals, the first thing which has to come into your mind, and that is they are lustrous. Lustrous मतलब क्या? Shine, चमक. Okay? तो metal जैसा बनो आप जिंदगी में, lustrous बनना है आपको. So metal जब एक pure state में होता है, okay, शुद्ध स्थिति में होता है, then it is going to be what? Lustrous. But my dear friends, when it is being exposed to the atmosphere is made up of various gases. Alright? तो उसके साथ उनका मिलन हो जाएगा. Okay, अशुद्ध बन जाएगा. Impurity, मिलावट. अब मिलावट तो आप जानते हो क्या होता है. Okay, जो चेहरा जो निखर आता है, वो बिखर जाता है. वही कुछ इधर होने वाला है. So, जो लस्ट्रस है, जो शाइन है, वो कम हो जाएगा.
Okay, it is going to deteriorate, or I use the word it is going to decrease. When it is exposed to atmosphere, वातावरण के साथ वो जुड़ जाता है. Atmosphere is made up of gases. So the reaction takes place. Okay, there is some impurity now, and this is what results in the decrease of luster, the decrease of shine. Next point is, when you talk about the metal part, the most important is, and that is they are flexible enough. Okay, and that is they can be converted into different forms. अलग अलग रूप में उसको ढाला जा सकता है. कभी उसको एक शीट के तौर पे देखो, कभी उसको वायर के तौर पे देखो, वो आपको बन के दिखाएगा वैसा. Okay, that is what is flexibility is. So the next point is, that is when we talk about malleability, this malleability is nothing but they are in the form of what? Sheets, plain sheets. Okay, and at the same time they will be in the form of wires. So what we call it as ductility. So they will be in the form of wires. Alright, so this is a pure indication that they are quite flexible enough to be converted into this particular form. Next one is, now about metals is, they are very good conductors of heat and electricity. Okay, heat को यहाँ से चालू करो, यहाँ तक बह जाएगा. Electricity, electric current, you pass it at one particular area, it will flow into the other area after some time. So this is called as flow, this is called as conductivity. So the next point is about metals is that they are good conductors of heat and electricity. Okay, it is both heat as well as electricity. Next thing is, बहुत सख्त भी है ये. Okay, ऐसा flexible भी है. Okay, थोड़ा अंदर से सख्त नहीं बोलेंगे उसको, बाहर से बोलेंगे सख्त. नारियल देखा है, कुछ इस प्रकार का है ये. बाहर से वो सख्त है, अंदर से वो नरम है. आप जो बोलो उसमें वो ढल जाएगा. तो वैसा कुछ इधर भी है. So that means the next property which I am talking about, yes, you are very smart enough. I hope you understood what I want to say. And that is, they are going to be what? Hard. Okay, अभी hard है. आप देखो जैसे मैंने बोला है, ऊपरी हिस्सा अगर सख्त है, हमें अंदर की तरफ जाना है, वो जो मुलायम है, तो वो सख्त को अंदर जाना है, सख्त के अंदर से अंदर जाना है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको. Or just say we call it as melting point and boiling point. So the next point which we need to understand is that the melting point and the boiling point is going to be very high. You must have heard about tungsten. नहीं सुना है तो जरा चेहरे से दिखाओ, ऐसे मत बैठो. Okay, tungsten. Okay, वो बल्ब में होता है. It is in the form of filaments. Okay, that melting point of that tungsten goes to around 3400 degrees Celsius. If that is the strength, okay, that tungsten filament has. Okay, that is what we say. The melting point and the boiling point is going to be very high. But then, my dear friends, it's all chemistry. It's not that simple. जिंदगी इतनी आसान नहीं है, तो chemistry भी इतनी आसान कैसे होगी दोस्तों? लेकिन उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, सरल बन जाएगा. And that is, when you talk about your hardness, majority of the metals are going to be hard. But then we have certain metals, like examples I would like to give you: lithium, sodium, potassium. They are group 1 when you talk about the periodic table. They are also called as alkali metals. काफी soft होते हैं वो, मुलायम होते हैं. थोड़ा चाकू का वार कर दिया जाए तो जैसा दिल घायल हो जाता है, वैसे ये भी घायल हो जाते हैं. Okay, so it can be easily cut with a knife. So in this case, we can say the melting point and boiling point is less. Okay, so there are some exceptional cases. So this is the one, okay, which are coming under the exceptional cases. So these are alkali metals, are that's why called as soft metals. Okay, their melting point and boiling point is comparatively low.
आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड कंपैरेटिवली लो। जब हम इसकी तुलना करेंगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया टंगस्टन के साथ, तब हम पता चलेगा हमें कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। ओके, चाकू से उसको आसानी से हम काट सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो दिस आर द की पार्ट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, समझ में तो आई बात है आप लोग को? हाँ, चेहरे से मुस्कान लग रहा है आप लोग को। सो प्लीज एक बार देख लीजिए। ओके, थैंक यू। कुछ सुनाई दे रहा है? ये आवाज है, दिल की तरंगे बज रही है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड दैट इज साउंड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज sonorous. What is it called as? Sonorous. That means having a characteristic sound. Okay, थोड़ी आवाज है, थोड़ी अलग से आनी चाहिए वो, इसलिए थोड़ा अलग तरीके से इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया आप लोग को। बाकी की सारी प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होगी अच्छी तरीके से। So this we say becomes the crunch of what metal is all about. Okay. Now, once you understand what are the physical properties of metal, we go into the next part, and that is non-metal. दोस्तों एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका होता है। ओके, उससे कनेक्ट कर कीजिएगा। ओके, जैसे हम रिश्तों को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो रिश्ता गहरा बन जाता है। ये भी कुछ ऐसा ही है। केमिस्ट्री सब पढ़ने चाहते हैं और फिर लगता है अरे बाप रे बहुत ज्यादा बड़ा केमिस्ट्री है, नहीं होगा हमसे। ऐसे मत कीजिएगा। एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से कनेक्ट कीजिएगा। एक ही कंसेप्ट पढ़िए, दूसरा कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जैसे एक मिसाल देता हूं मैं आपको। जस्ट नाउ वी लर्नड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यस और नो? आई होप यू स्टिल रिमेंबर। कम ऑन, से यस फ्रॉम योर माउथ। यस, मेक द ऑपोजिट, यू गेट इट फॉर नॉन मेटल्स। So you have to learn only about the physical properties of metals. अपने आप आपको नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी पता चल जाएगा, आधा हो जाएगा। देखो फिर कितना अच्छा हो जाएगा, याद रखने का बहुत आसान हो जाएगा आपको, और केमिस्ट्री अच्छा लगने लगेगा। केमिस्ट्री से नफरत मत कीजिएगा। ओके, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ठीक है? सो वी स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो वी बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई टोल्ड यू वाज, when I told you about metals, I said the metals are going to be in a solid state. So here, when we talk about non-metals, the general properties are that only majority of these non-metals are going to be in the gaseous state. Okay, they are gases. Okay. क्या होगा? वो वायु की तरह है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ओके, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स, सो दे आर गैसेस। बट देन एज आई सेड, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस एज वेल। ओके, एक्सेप्शनल केस होता है मुंह बिगड़ जाता है, पता है आप लोगों को? जब तक सब जनरल होता है बहुत मजा आता है। अरे कहाँ से एक्सेप्शनल केस आ गया, ये देखो ये ऐसा मुंह बन जाता है आप लोगों का। ओके, देख लेना एक बार आईने में, ऐसा होता है ना आपका मुंह। हाँ, क्या करें लेकिन। ओके, ये भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा है। ओके, इससे दूर नहीं भाग सकते। तो एक्सेप्शनल केसेस में क्या आ जाएगा कि लिक्विड भी है, और वो कौन है? ब्रोमीन। ओके, इट इज गोइंग टू बी इन द लिक्विड स्टेट। सम ऑफ देम माइट बी इन अ सॉलिड स्टेट आल्सो। ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल अबाउट आयोडीन। ओके, सो जब मुंह बनाने की बारी आती है तो कोई लिक्विड होता है, कोई सॉलिड होता है। ओके, सो दिस सॉलिड इज आयोडीन। All right, that's property number one. Next one is that when you talk about these particular elements, since majority of them are going to be gases, so they are going to be what? Soft. Okay, they are going to be soft, right? But once again, मुंह बनाना है ना अपने को, कुछ exceptional cases है। कौन सा है सुना है आप लोगों ने? डायमंड। ओके, क्या चमकता है, चेहरे पे भी ऐसी चमक आनी चाहिए आपकी। डायमंड, विच इज नथिंग बट इट्स वो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। वो कार्बन का एक रूप है, और वो क्या है? इधर मुंह बनाया हुआ है, ये सॉफ्ट है, तो ये क्या होना चाहिए फिर? यस, यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, एंड दैट इज इट इज गोइंग टू बी व्हाट? हार्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज
when we talk about its melting point and boiling point, because they are soft, so their melting point and boiling point is going to be less comparatively. Once again, the exceptional case is diamond. Diamond ka melting point and boiling point is going to be very high. Okay, because it's going to be a hard solid. Next point we go into, and that is conductivity. नहीं बहता है यहाँ पर. ओके, जैसे जिंदगी स्थिर हो गई है वैसे कुछ इधर भी हो गया है. ओके, कोई लगाव नहीं है ना तो बहना कम हो जाता है. सो यहाँ पर भी, if this is a non-metal, suppose I heat it at this particular end, the entire heat is localized over here. सिर्फ इतना ही हिस्सा गर्म रहेगा, ये सारा हिस्सा ठंडा रहेगा. लेकिन अगर मेटल है तो अगर इस हिस्से को मैंने गर्म किया थोड़ी देर में, इधर भी ओ माय गॉड गर्म लगेगा इतना थोड़ी देर के बाद. बहता है ना हीट एक जगह से दूसरी जगह. ओके, ये अंतर है. सो यहां पर वी से दैट दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसका दूसरा नाम है, नाम तो सुना होगा, एंड दैट इज इंसुलेटर्स बोला जाता है इनको. ओके, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? इंसुलेटर्स. बट देन वंस अगेन आ गया वापस से वो मुंह बनाने का एक्सेप्शनल केसेस, ग्राफाइट. या जिस तरीके से डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, सिमिलरली द अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्राफाइट. एंड दिस ग्राफाइट has a tendency to bring about flow of current to a certain extent. Okay, so once again we show over here. Okay, I hope you understand this very well. Okay, exceptional cases में क्या आ जाएगा? ग्राफाइट. Okay, तो यहां पर हम लोग ने बोला है कि they are non conductors. Graphite is going to be conductor to a lesser extent. Okay, insulator नहीं बोलेंगे और उसको हाईली कंडक्टर भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके मुकाबले में कंडक्टिविटी है उसके पास. ओके, सो दिस बिकम्स द जनरल पार्ट. थोड़ा रिजिडिटी भी है इन लोगों में. वी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड वायर्स वेरी इजीली. ओके, उनका जो अपीयरेंस है काफी डल है. ओके, जैसे मैंने बोला ना, ओके, ज्यादा मोह माया से दूर है तो चमक जैसी की बात नहीं होती है. अगर आप किसी से मोहित हो जाते हो, किसी के माया जाल में फंस जाते हो, अरे देखो आपका चेहरा कैसा चमक उठता है, ये यहां पर नहीं है इन दोस्तों में. ओके, सो दैट मीन्स द लस्टर की जब हम बात करें वो नहीं होगा, इनमें नहीं दिखाई देता है. ओके, वो उनका अपीयरेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? डल. बट देन यस, कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केसेस तो है ना, कुछ तो अलग से कोई होगा ही, and that is going to be what? This is the one. Okay, I told you about iodine few minutes back. Iodine has got very shiny crystals. बैंगन जैसा कलर है उसका, वायलेट कलर, और वो क्या चमकता है. वाओ. Okay, so this iodine has got shiny violet crystals. Right? So this becomes what? The basic crunch of the physical properties of nonmetals. These are the general properties. Majority of the nonmetals are going to show all these properties. ये समझ में आ रहा है ना कहीं तो वो exceptional cases तो आएगा ही. So these are the exceptional cases. I hope you have understood very well now. Now we have understood about both the metals as well as non-metals. हाँ, तरंगे आएगी? नहीं आएगी. वो तो सिर्फ मेटल में वो ऐसी आवाजें करते हैं. यहां पे कहा होगा वायु में कहां आवाजें आती है. सो दे आर नॉट गोइंग टू बी सोनरस. सो दिस बिकम्स अ कंपैरेटिव पार्ट नाउ. Okay, between a metal as well as non-metal. Okay, and it has to become absolutely clear to you. Yes, this is what is the major difference in the physical properties of these two major components, that is metals and non-metals.